हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडिया.com विद जिज्ञासा सहाय। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट है who might make you nostalgic because she's always associated with those fantastical elements. Yesterday, we are in conversation with the very talented Pranal Kulkarni. Hello, Mrinal, ma'am. Hi, Jigyasa. It's so great to have you here and have you here for this conversation. First of all, a big, big congratulations for your upcoming show, Petni Z5 on Z5 Global. And we saw the trailer. उसको already काफी love मिल रहा है. And I really want to congratulate you on the theme. So it's so different. एक अलग ही cultural heritage take है उसमें. एंड एट द सेम टाइम एक मदर डॉटर की कहानी भी है वेयर अ डॉटर वांट्स टू डू समथिंग गो अबव एंड बियॉन्ड एंड डू समथिंग फॉर हर मदर. सो Yes. इफ यू कुड जस्ट टेल अस मोर अबाउट कि कितना कंट्रास्टिंग थीम है, तो कैसे इसकी ट्रेजेक्ट्री रहेगी, कैसे इसका फ्लो रहेगा. ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई तो आई वॉज वेरी वेरी थ्रिल्ड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड पैटर्न इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. जब मुझे पता चला कि आई एम वर्किंग एज अ वीवर, राइट. आई एम प्लेइंग अ पार्ट ऑफ अ पैठनी वीवर, तो आई वॉज झट से मेरे कान खड़े हो गए एंड आई टोल्ड माई डायरेक्टर दैट आई वॉन्ट टू गो टू द रूम 2 days before we start the shoot, and I want to learn that because I know my director Gajendra. I have worked with him before, and he is a kind of a director जो बहुत intricately shoot करते हैं. तो मुझे पता था कि अगर मैं लूम वर्कर हूँ तो वो मेरे हाथ के शॉट्स लेंगे, वो लूम के काफी सारे शॉट्स लेंगे. ही शूट मी वाइल आई एम वर्किंग. मतलब ऐसा नहीं कि खाली डायलॉग 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 बोलूंगी, वो मेरा पूरा काम दिखाएंगे. एंड आई वांटेड टू बी परफेक्ट, आई वांटेड टू बी सो ट्रू टू माई कैरेक्टर कि मैंने एक क्रैश कोर्स किया पैठनी बुनने का. एंड इट इज अ वेरी वेरी टफ टास्क. इट इज सच अ टफ टास्क कि एनी हैंडलूम फॉर दैट मैटर, जो चीजें हाथ से बुनी जाती है, दैट इज वेरी टफ. इट्स एन आर्ट. स्पेशली इन केस ऑफ पैठनी, एक धागा होता है सोने का, एक होता है चांदी का, और एक होता है रेशम का, और उससे बनती है डिजाइन. तो इतना जबरदस्त आर्ट है ये, और सालों से, कई सालों से चलता आया है. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड द सेकेंड पार्ट इज मदर एंड डॉटर, जो एक ब्यूटीफुल कहानी है कि एवरी मदर ड्रीम्स फॉर हर डॉटर कि उसके सपने पूरे हो जाएं, उसका सब कुछ अच्छा हो जाए, जो बच्ची सपना देख रही वो पूरा हो जाए. लेकिन एक लड़की अगर माँ के लिए सपना देखे तो वो बड़ा ही अलग किस्म की स्टोरी है, जो मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी. एंड आई वाज वेरी ईगर टू प्ले अ पार्ट ऑफ गोदावरी. राइट. इट्स सो नाइस टू हियर कि यू वेंट देयर, यू आपने वो आर्ट को समझने की कोशिश करी कि कितना उसमें मेहनत लगती है. दैट्स वंडरफुल मैम, दैट्स ग्रेट. सो लाइक यू सेड कि इसमें जो स्टोरी है मदर और डॉटर की भी, सो देयर आई कुड इन द ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि कुछ अंडरस्कोर थीम है अबाउट women and women navigating the world and everything. सो आजकल इतने शोज हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट या प्रोग्रेसिव वुमेन थॉट्स के बारे में है. सो आपके हिसाब से हाउ दिस वुड बी डिफरेंट बाकी सबसे. ये शो डिफरेंट इसलिए है कि इट्स अ वेरी पोएटिक शो. ओके. Also, it is different because it's on Z5 Global. राइट. If we see the content of web nowadays, Z5 Global content stands out because there is so much crime happening all over. So pattern is a subject which will freshen up the viewers. They'll say see something positive. They'll say see something which is very very emotional and very very special. It will also represent emotions of all the daughters for their mother, also all the sons for their mothers. So it's a family tradition, and I'm grateful to Z5 Global for putting up such a great content on global. राइट. वेरी राइटली सेड मैम. एंड आई थिंक द आइडिया कि थोड़ा पोएटिक
turn hai, that probably brings a fresh perspective on the Yes, tour as well. So, absolutely. ma'am, talking about your journey and how, मतलब ये भी है कि आपने काफी सारा जो आपका काम है, it's often associated with historical films or period dramas and या फिर कुछ socially driven, all these things. So, was it a conscious choice to, find, do scripts जो थोड़े historically inclined है, and or was it something that just came your way? एक्चुअली मैंने हिस्टोरिकल शोज किए हैं, मैंने सोशल भी काफी सारे शोज किए हैं। जी पे हसरतें नाम का मेरा शो आता था, विच वाज वेरी वेरी फेमस। फिर एक टीचर नाम का शो आता था, दैट आल्सो वाज वेरी फेमस। सो I have on Z Marathi, I have done a show called Avantika, that was a channel driver. So I have done a lot of things on television, and I always love to portray strong women. When Mm-hmm. we speak of women empowerment, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं हर किसी के लाइफ में, बट द वुमन इज वन who knows to go on Right. in spite of all the problems and difficulties in her life. So that is what is shown in Patni. So that drove me to portray this character. Right. I think you have very rightly put कि कैसे it is important to, give that message out of like a strong women character. And Yeah. speaking of TV, काफी साल तक like now we have progressed a lot in terms of content कि क्या दिखाया जा रहा है, and also it seems like we are moving in the right direction. But at the same time, मैम, I think कि कुछ shows अभी भी हैं जो थोड़े regressive है, जिनके dialogues, जिनके scenes are still regressive. So, do you think कि such kind of things again take us two steps back? Yeah, but as you rightly said, the number of such shows is decreasing day by day. And at times it happens कि पहले regression होता है, उसके बाद ही progress होती है. So हाँ. maybe it is important to show regressive content and then come out of it. So if it is that, I'm very happy about it. But if it is not that, I think gone are those days when we used to see all the regressive content. Right. And I think with shows like Paithani, we are, bringing that change every day. Yes, absolutely. Ma'am, with you on here, how can we not talk about the iconic, the cult classic Sonpari here? तो आई पर्सनली वॉज अ बिग फैन। मैं हमेशा लंच यही शो देख के ही किया करती थी, एंड आज भी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रिमेम्बर यू विद दैट आइकॉनिक कैरेक्टर। इट वाज सो ब्यूटिफुल, इट वाज सो एंजेलिक, लाइक वी सॉर्ट ऑफ बिलीव्ड इन फैंटेसी बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर हम थोड़ा टाइम में पीछे चले, सो इफ यू कुड रिकॉल एंड टेल अस हाउ सोनपरी हैपेंड फॉर यू। Yeah, it was a very special show for me also. And जब मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा तुम जो काम करती हो वो तो बड़ा सीरियस होता है, मेरे लिए कुछ करो ना. And at the right time, the right concept came to me, and I was very happy portraying Sonpari. And the next generation is in love with me. That's a very nice thing. But right now, we are talking about Pathani, and we are talking about Z5 Global. So thank you very much for the compliment. But I want all of you and your audience to watch Z5 Global, and please watch our show Pathani and let us know how to like it. Right, absolutely. Everyone is probably very excited to see you and cultural part and everything. So speaking about the show, जैसे कि आपके co-actor Isha Singh is there. So currently she's doing great on Big Boss. So have you happened Yes. to maybe catch upon the show? अगर आपने देखा हो, so how you liking, how about her game? Anything that you would like to say on that? See, when you play a mother to a daughter, Yeah. so I played mother to Isha, and when I came to know that she's going to Big Boss and she'll be facing all the problems there, and I don't know how she'll do. So even I was very scared, like a mother. I was very tense for a few days, I must admit. And after I saw one episode, and she was so good in that. So I knew ki she is going to be there uh, and show her strengths. So I wish her all the best, and I'm very happy for her.
That's great. You know, ma'am, before we wind up, I just wanted to ask, like, even in the show, जो names हैं female characters के, Godavari, Kaveri, and Ganga. So, is that like, is there a story behind कि intentionally reverse पे ही name है? Like, is there something behind? Is there a like My important? writer director, he wanted to um, tell the audience that every woman is like a river. Mm-hmm. She faces many problems, many hurdles come her way, but she knows only one thing. She just goes ahead. She doesn't think of any problems. She doesn't stop for anything. She just goes on and on. और वो किनारों को हरा भरा करती रहती है. So he compares women to the rivers. That is why very thoughtfully my writer and director they have chosen the names of rivers for the lead characters in the show. Right, like you said, कि poetic show है. Yeah, So, you know, that's the metaphor, the yeah, everything that goes under it. yeah. That's great, ma'am. Thank you so much for this conversation, ma'am. And we all are really looking forward for the show. Definitely बहुत fresh perspective है, culture भी है, एक message भी है. So I hope it does well. So thank you Yes. so much and all the best for your show. Thank you, Jigyasa. Thank you so much for watching.